Hello everyone, I hope I am audible and visible properly. Let me check with my technical team whether that is okay or not. I guess everything seems to be fine. Everything seems to be fine. Yes, I'm properly audible and properly visible as well. Right. Okay. So yes, here we are discussing about the fortnightly current affairs. And please don't mind if I'm like wiping sweat क्योंकि मैं अभी मुंबई में हूँ and Mumbai is quite humid, all you know that. Right, so let's start with what we are having. The thing is कि last 1 week, not entire fortnight, not entirely 15 days, but last 1 week was quite happening. I mean, there is this particular debate about rights of an individual against against arrest and something regarding the Manish Sisodia case. Then we got this election commission wala thing. We also get some reports, some indices. So बहुत सारी चीजें थी cover करने के लिए, but we just made sure कि आपके पास वो सारी चीजें हों. मतलब वो सारी चीजें आपके पास जो है वो डेली करंट अफेयर्स के फॉर्म में मिल रही हैं. So we are going to discuss something that is important, that is directly linked, directly important for the CLAT exam. Right. Hello, Bhanu. So let's start what we are having. Okay, the Supreme Court verdict on the appointment of Election Commission of India. Yes, भैया Election Commission of India is there, जो कि एक supreme authority है, एक independent body है, that actually deals with the election of the parliament, election of the state legislative assemblies and council, and it is a very important body that conducts the independent election and it manages all the election as well. Right. So recently, Supreme Court simply mentioned that there should be a new method of appointing the chief election commissioner and others. Yes, for now, the simple process is a bunch of names that that cabinet get, and after the bunch of name, one particular name is being settled. This particular person is eligible to be election commissioner or chief election commissioner, and then it is sent to president, and president directly pass the order, give the order, and notify everyone that this individual has been appointed as the chief election commissioner or election commissioner. The Supreme Court said this time you are not going to have this process. There will be a high-powered committee that will have a prime minister, leader of opposition in Lok Sabha, and the CJI, Chief Justice of India. And after debating, after discussing all the things, right, whether this is correct, this is not, and this name is correct or not, they actually will finally pick the chief election commissioner and election commissioner. And again, same thing, the president will appoint that person as the chief election commissioner or election commissioner. Right. So that is the verdict, that is the judgment that Supreme Court gave recently. Let's find out how it started actually. Okay, so first of all, constitutional provision क्या कहते हैं for now. So part 15 of Indian Constitution, Article 324 to 329, this is associated with the election commissioner, election commission, and election. Right. Indian Constitution कहता है कि it deals with the election and establish the commission for these matters. Right. So when it started, when 1950, our constitution was accepted, at that time, there is just one election commissioner. In 1989, it became a multiple body, one election, chief election commissioner and two other election commissioner, क्योंकि काम बढ़ रहा था. See, undoubtedly, इंडिया का इलेक्शन को दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है. That means Indian elections are termed as the biggest affair of the democracy in the world, biggest fair, biggest festival, right? So that is why managing के लिए थोड़ा सा वो रहता है. And for now, there is like this one election, chief election commissioner and two election commissioner. Okay, so how it started in 2015, there was this PIL by Anup Barnwal,
who was challenging the constitutional validity of appointment of election commissions. So इलेक्शन कमीशन में जो भी अपॉइंट होते हैं, अपॉइंटमेंट होती है, वेदर दिस इज इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है उन्होंने चैलेंज की थी. द थिंग इज कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर फाउंडिंग फादर, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, they clearly meant that the appointment of election commission is subject to the law that is supposed to be passed by the parliament. But from last almost 75 years से, independence के बाद से, we don't have any new law or any law at all regarding the judgment, regarding the appointment of election commission. So that is what they actually challenged, ki whether this is constitutionally valid or not, right? In that particular thing, 2018, the Supreme Court two judge bench referred to a larger bench, क्योंकि ये constitutional constitutional examination of Article 3 to 4 के बारे में था. And finally, 5 जज की जो बेंच थी, उन्होंने रिसेंटली ये जजमेंट पास किया कि अभी आप क्या करें भैया, चीफ इलेक्शन जो वो है, प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा, और इन केस ऑपोजिशन लीडर नहीं है, देन द लीडर ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, राइट, जो गवर्नमेंट में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक अगर कुछ नंबर ऑफ स्पेसिफिक एमपीज नहीं होते, देन इट इज लाइक इट इज देयर कि जो भी पर्टिकुलर लीडर हैं वो इलेक्ट किए जाएं, या दूसरे जो पर्टिकुलर पार्टी उनके लीडर को अपन ऑपोजिशन का लीडर मानते हैं, वो, और सीजेआई विल बी देयर. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, द लॉ, द आर्टिकल 3 to 4 है ना, सिंपली जो हमारे फाउंडिंग फादर्स की तरफ से जो अब मैसेज था वो ये था कि ये पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट जो पार्लियामेंट लॉ पास करती है उसके अंडर रहेगा. सो दैट क्लियरली मीन्स if after this particular committee thing, high powered committee consisting of prime minister, opposition leader of Lok Sabha and CGI, अगर इसके बाद पार्लियामेंट अपॉइंटमेंट के लिए एक लॉ पास करती है तो वो लॉ वैलिडेट हो जाएगा. ये भी क्लियर कट उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर पे डिफाइन किया था, राइट? So that is how this is what exactly happened to from last almost 70 years. कायदे से तो 7 years ही हुए इस particular challenge को, but overall 70-75 years से ये बात finally यहाँ पे पहुंची है. Moving on, now what is the other aspect that they said? I told you, like, power of Supreme Court and High Court establishing the SC/ST backward classes commission, right? So simply we are talking the same thing, subject of a provision of any law made by parliament. This is something जो कि मतलब वैलिडेट करता है. सो उन्होंने भी यही कहा कि इनकेस आप लॉ बना देते हैं तो हम ये पर्टिकुलर चीज हटा लेंगे. एंड हाउ दे आर बीइंग रिमूव्ड, इसके लिए भी बात चल रही है. लाइक इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दे कैन रिजाइन एट एनी टाइम, राइट, और दे कैन बी रिमूव फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म 65 के पहले से. और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका जो रिमूवल प्रोसेस है वो सिमिलर होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, और पार्लियामेंट उसको क्या करती है, स्टार्ट करती है और पास करती है, राइट? सो दैट वाज समथिंग जो कि एसोसिएटेड है. यहाँ पे क्लोजली उन्होंने कुछ चीजों की बात की है. एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो थॉट्स थे, जिसमें हम फाउंडिंग फादर्स थॉट के हिसाब से बात करते हैं, राइट, उसकी बात की है. सेपरेशन ऑफ पावर की बात की है, राइट? And apart from that, the kind of rumors, the kind of news that was going around the media and political world की जितने भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो बायस्ड हैं, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, फाइनली कैंसिल आउट कर दिया. सो दैट वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, राइट? सो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस, कुछ पर्टिकुलर चीजें जो है वो क्लियर रहेंगी. सबसे पहले तुम्हें ये हाई पावर्ड कमेटी जो है उसके मेंबर्स याद रखने होंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस पार्ट में इलेक्शन कमीशन के बारे में है, व्हाट आर द आर्टिकल एसोसिएटेड विद दैट, कब इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट, कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट आया था, व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर नाउ, हु इज करंट इलेक्शन कमिश्नर, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सारी चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन है. Okay, let's move to the next topic. That is an index which is known as International IP Index, that is International Intellectual Property Index. अभी like सबसे पहले क्या इंडेक्स में आया उसकी बात करते हैं. India was ranked 42nd among the 55 leading global economies, right, in terms of intellectual property
और ये इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया है यूएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने। तो यूएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के हिसाब से जो टॉप 55 लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमीज हैं उसमें जो इंडिया है वो 42nd रैंक पे है व्हेन इट कम्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, and like India में जो भी particular चीजें हैं, the kind of market we are having, the kind of transformation we are having, the kind of startup driven like innovation we are having, we can improve every single day. इस particular उसमें IP index में, international intellectual property index में अमेरिका अभी भी नंबर 1 है ना? So don't mind. Moving on, what is an intellectual property? That is something जो कि समझने लायक है। When it comes to intellectual property, है ना, it is like creation of mind such as inventions, literary, artistic work, symbols, name, images used in commerce, etc. So anything that that new you are creating by thinking, by your mind, by your thoughts, right? That will come into the intellectual property. That can be tangible and non-tangible. So imagine I want to write a book. So I have a story and I started writing a book and I decided there should be some title of the book. So मैंने एक title चुन लिया, that is Hope. So what I have to do, I have to register this title, right, to the intellectual property institution so that nobody else can use this title for their book. Similar is with the inventions, हमें पेटेंट कराने पड़ते हैं, है ना? मूवीज के नाम के लिए हमें वो करना पड़ता है. Symbols if we are creating the names or any other particular images in the commerce or industrial use, all the things that you are creating from your mind and creating new comes under the intellectual property, right? It is a form of legal protection, right, given to an individual or any institution or any other company or a business leader for their innovative work, for their new creation. So if somebody is having the intellectual property right of something, that means uske paas legal protection hai us cheez ke liye. Nobody else can use those things. So मैंने एक ऐसी कार बनाई जो हवा से चलती है. Yeah, let's take an imagination. Let's take something into the euphoria. So I invented a car that is going to use air, the atmospheric air, as the fuel. Right. So this is something new that I have created क्योंकि अभी तक अपने पास कोई ऐसी चीज नहीं है. Right. So मैंने क्या किया, मैंने पेटेंट कराया. Now that thing belongs to me. अगर मैं चाहूँ तो किसी बड़ी कंपनी को डिजाइन और प्रोडक्शन की चीजें बता के अपने लिए पैसे कमा सकता हूँ. But without my permission, nobody is going to use it. अगर किसी ने यूज किया उस चीज को तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर केस करूंगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का और वो हजाना पड़ेगा. Right. Intellectual property is also defined under the Universal Declaration of Human Rights as well. So that is another reason people are getting serious day by day regarding the intellectual property. So what is this index? Right. हर एक index का एक specific form होता है. Every index has certain parameters. Every index has certain criteria to judge any individual or any particular thing. Like for example, here is intellectual property ecosystem. So they are having like close to 50 different unique parameters जो economics and industry से related होते हैं. And on the basis of that, they actually like rank countries, है ना, in such a fashion कि हाँ भैया तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा ठीक है, तुम्हारी रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी रैंकिंग बुरी होनी चाहिए. So like some of the criteria indicate copyrights में कितना अपन आगे बढ़े, patent में कितना आगे बढ़े, what are the trademarks, design rights में हमारा कितना वो है, trade secrets, etc. etc. So they are having close to 50 parameters to rank all these things. So I hope this particular thing is clear कि क्या होता है intellectual property and how this index work. Okay. What are the finding for India? That is something जो तुम्हें मजेदार हो जाएगी. The thing is कि India, the kind of startup ecosystem we are having, तुम्हें पता होगा India is the third best largest startup ecosystem. We are having more than 100 unicorn companies and we are having lots of new startup. We are having programs like Startup India. We celebrate startup in terms of week, startup week होता है. The government supports startup and the investors support startup. So yeah, we are having good particular startup setup and with good innovative ecosystem. So we are having lots of potential to grow in terms of intellectual property. All right.
So India is undoubtedly is one of the member that has signed the agreement on the trade related aspects of intellectual property, right, which is known as TRIPS agreement, that is trade related aspects of intellectual properties, right. India is also a member of World Intellectual Property Organization. This is a particular institution that is responsible for all the sort of promotion, all the sort of awareness campaign regarding the intellectual property throughout the globe. Okay, so this is an important institution भैया. इसका हेडक्वार्टर, इसके करंट चेयरपर्सन जो है, उनका नाम आपके नोट्स में होना चाहिए. आगे आने वाले टाइम पे वकील होने वाले हो तुम, ठीक है. Apart from that, apart from being part of global institution, global agreement, India is also having its own intellectual property setup within the nation's boundary. For example, the National Intellectual Properties Right IPR पॉलिसी 2016 है ना, ये प्रॉपरली एक रिसर्च डॉक्यूमेंट है जो इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के डेवलपमेंट पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के प्रोटेक्शन पे काम करता है, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग सम इन्फो, लाइक वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम इन दैट. द थिंग इज कि majority of Indian doesn't are aware about the intellectual property, राइट. सो दी लाइक जो एफर्ट गवर्नमेंट ने डाले हैं उसके बाद भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं. फॉर एग्जांपल पायरेसी इज देयर, फॉर एग्जांपल like enforcement of intellectual property is a big problem in India. इंडिया में बैकलॉग पेटेंट एप्लीकेशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज है. बहुत सारे लोगों ने पेटेंट के लिए अप्लाई कर रखा है बट उनको अभी तक नहीं मिला है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द अवेयरनेस, right. So these are the challenges that India is facing according to the index, and these are the efforts that India has put, and these are the agreement India is part of in terms of global institution or global agreement, right. So that is India in intellectual property, international intellectual property. So let's find out what are the questions. सबसे पहले रैंकिंग इंपॉर्टेंट होती है, इंडिया की रैंक क्या थी. सेकंड इंपॉर्टेंट होता है इंडिया का इंप्रूवमेंट कितना लास्ट ईयर से. देन हु इज फर्स्ट, which institution publishes the report, right. And like institutions like World Intellectual Property Organization or TRIPS agreement, ये कब आए, कहाँ हेडक्वार्टर है, कौन है चेयरपर्सन, ये सारी चीजें. देन इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट है वो कब आया, 2016 में लास्ट टाइम अमेंड हुआ था. सो दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपके मॉक में आपको देखने को मिलेंगे. सो आई होप यू आर क्लियर विद दीज टू टॉपिक्स. एंड let's start the objective questions. Yes, objective questions are also important. तो हमने इस बार भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको प्रॉपरली क्या किया हुआ है, सेट करके रखा हुआ है और हम उसको सॉल्व भी करेंगे, राइट. सो अच्छा, बड़ा सिंपल सा फंडा है. आप जब आंसर करें तो उस आंसर में ABCD प्रॉपरली लिख दें, है ना, और वी कैन डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग जो भी जैसा भी है. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. What is the theme of the World Wildlife Day 2023? 2023 World Wildlife Day का थीम क्या है? ध्यान रखना है जब भी when we are talking about an International Awareness Day, तो उसका डेट होगा, उसका स्टार्टिंग ईयर होगा और हर साल का एक इंडिविजुअल थीम होगा, राइट. सो इस साल के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम क्या है? The options are youth effort for wildlife conservation, partnership for wildlife conservation, partnership for green wildlife conservation for earth. Come on. Okay, Sachin का कहना है A, that's youth effort for wildlife conservation. Anyone else? The correct answer is option number C. Yes, partnership for green wildlife. 3rd of March, राइट, एवरी ईयर 3rd of March जो है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के फॉर्म में, ऑब्जर्वेशन डे के फॉर्म में मनाया जाता है. एंड इट एक्चुअली स्टार्टेड इन 2013. सो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए, उसके बारे में अवेयर कराने के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए ये पर्टिकुलर कन्वेंशन जो है, जो कन्वेंशन ऑन क्या कहते हैं उसको, इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ, फौना एंड फ्लोरा एक्सेट्रा, इसको एक्सेप्ट किया था
एंड जो ये कंजर्वेशन वाला पार्ट है, अवेयरनेस वाला पार्ट है, so that is why they celebrate this year every day from 2013. So 3rd March is the date, don't forget that. And this year theme was partnership for the green wildlife. Moving on. Okay, who will inaugurate the 8th edition of Raisina Dialogue? इनमें से कौन 8th edition of रायसीना डायलॉग जो है उनको इनॉग्रेट करेंगे? ऑप्शन है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, बताओ। ओके, सचिन का कहना है पीएम, दैट्स ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। और कोई? वेरी करेक्ट सचिन, द करेक्ट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रायसीना डायलॉग, है ना, न्यू दिल्ली में रायसीना हिल्स में ये पर्टिकुलर डायलॉग होता है, एंड दिस इज इंडियाज प्राइम कॉन्फ्रेंस, राइट, ऑन द जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी एंड डिस्कशन। Yes, 3 days dialogue is actually like geostrategy, geopolitics, talking about XYZ happening around the world, etc. etc. एंड इस साल की जो चीफ गेस्ट थी वो थी इटालियन प्राइम मिनिस्टर, दैट इज जियोर्जिया मेलोनी, राइट। और इस साल का जो थीम था इस डायलॉग का, राइसिना डायलॉग का, दैट वाज अ प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस ऑफ द टेम्पेस्ट। सो मेक श्योर कि लाइक द रायसीना डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जो है वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, दैट इज द नेम, वो एक थिंक टैंक है, उनके साथ मिलके वो कराती है, कंडक्ट कराती है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन की, कब शुरू हुआ, राइट, अभी के टाइम पे चीफ गेस्ट कौन था, थीम क्या थी, if there is new document or any sort of declaration that India has provided, that is also part of it. So ये सारे डेटा आप अपने उसमें अपडेट कर लेना नोटबुक में। मूविंग ऑन, which player has won the best men's footballer award at the FIFA Football Award 2022? 2022 का men's footballer, best men's footballer कौन है according to FIFA? Options are Lionel Messi, Karim Benzema, Kylian Mbappe या एमिलियन मार्टिनेज। बहुत इजी है, सबके सब आंसर करो। ओके, सचिन का कहना है ए, दैट इज लियो मेसी। ओके, वेरी करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लियो मेसी, है ना भैया। फुटबॉल का वर्ल्ड कप जिताया लड़के ने, काम भी किया खूब सारा, है ना। सो ये हो गए बेस्ट मेन फुटबॉलर फॉर 2022। बेस्ट फीमेल फीमेल फुटबॉलर, वुमेन फुटबॉलर, ये थी एलेक्सिया पुटिस, राइट। और जो ये है एमिलियानो मार्टिनेज, इनको बेस्ट फीफा गोलकीपर, मेंस गोलकीपर अवार्ड मिला हुआ है। सो दीज आर द सम नेम जो कि इंपॉर्टेंट है फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, Australia won the title of Women's T20 World Cup 2023. In which country tournament was organized? So, हाँ, हम नहीं पहुंच पाए फाइनल में, हम नहीं जीत पाए विमेंस T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। पूछा जा रहा है कि किस पर्टिकुलर कंट्री में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, बताओ। ओके, सचिन का कहना है सी, दैट्स साउथ अफ्रीका, राइट। और कोई? दैट्स करेक्ट, साउथ अफ्रीका, राइट। सो ऑस्ट्रेलिया जीत गई, आई गेस 156 का स्कोर था। साउथ अफ्रीकन टीम को उन्होंने साउथ अफ्रीका को रनर अप 16 रन से हराया था, एंड दैट वाज द T20 वुमेन वर्ल्ड कप। नोबडी विल टॉक अबाउट क्रिकेट। हाँ, अभी एक दिन पहले ही काफी झटका लगा है जब इंडिया हारी ऑस्ट्रेलिया से। आई मीन, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस सॉर्ट ऑफ डिफीट। सो लेट्स मूव। Which Indian American has been selected as the new CEO of YouTube? पूछा जा रहा है कि इनमें से किस इंडियन अमेरिकन को एक नया यूट्यूब का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन है शांतनु नारायण, नील मोहन, जॉर्ज कुरियन, राज सुब्रमण्यम। बहुत इजी है ना, जस्ट मेक श्योर कि क्लियर है।
19 रन। ओके सचिन, आई डिडंट रिमेम्बर, मुझे 16 याद है जब मैंने पढ़ा था, मतलब देखा था कल, कि उस टाइम पे मैं कुछ काम भी कर रहा था, सो हो सकता है स्किप हो। ओके, सचिन का कहना है बी, दैट्स नील मोहन, वेरी करेक्ट। Neil Mohan is going to be the new CEO and of world famous video sharing platform YouTube. Yes, आप YouTube में रोज कुछ ना कुछ देखते हैं, सो भैया ये भी देख लो। द फॉर्मर सीईओ जो थे, क्या नाम उनका, सुजैन वोज्की, राइट, ही वाज एन अमेरिकन पॉलिश, जिनको इन्होंने रिप्लेस किया है, एंड मोहन हैज सर्व्ड एज like chief product officer of YouTube, and he is like managing YouTube from very long period of time, and he is part of YouTube for very long period of time, so that's okay to be appointed as a CEO, right? Moving on. What is the theme of Asia's biggest aero show, Aero India 2023, inaugurated by Prime Minister Modi? पूछा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2023 को इनॉग्रेट किया पीएम ने, उसका थीम क्या था? The options are the runway to a billion opportunities, Aero show for the billion opportunity, the runway of Atmanirbhar Bharat, Trade Expo and Defense Expo show. बताओ। Okay, सचिन का कहना है सी, that is the runway of Atmanirbhar Bharat. Mhm. The correct answer is option number A, the runway to a billion opportunities. ये एशिया का सबसे बड़ा एरो शो है। दिस इज द 14th एडिशन जो इंडिया ऑर्गेनाइज कराती है। Approximate 80 countries participated in that. Close to 700 plus like executive was part of it, and it was huge. It was grand actually. And this year the theme was to run the runway to a billion opportunity. Undoubtedly, Atmanirbhar Bharat is one of the major program that the Indian government is focusing, but like not in all the case. Not in all case they are going to have Atmanirbhar Bharat as the main theme. So just make sure कि थोड़ा सा theme वो करेंगे. Moving on, what is the name of the new AI chatbot introduced by the UIDAI recently? UIDAI is Unique Identification Authority of India, जिसे आप आधार के नाम से जानते हो, राइट? सो पूछा जा रहा है what is the name of the new chatbot जो आधार ने वो किया है? ऑप्शंस आर आधार सहयोगी, आधार मित्र, आधार साथी, आधार मदद। बताओ, बहुत इजी है ये तो। ओके, सचिन का कहना है बी, दैट इज आधार मित्र, वेरी गुड। और कोई? वेरी करेक्ट, द ऑप्शन द आंसर इज आधार मित्र। यस, ये एक एआई मल्टीलिंगुअल लाइक काइंड ऑफ दो ही लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश में रिस्पॉन्ड करता है, राइट? एंड चैटबॉट है जो आपकी सारी बातें मानेगा। सो इमेजिन यू हैव अप्लाइड फॉर आधार एंड यू डोंट नो योर एप्लीकेशन स्टेटस, द आधार मित्र वो विल बी द वन जो आपको क्या करेंगे, बताएंगे कि ये आपका स्टेटस है, आपका क्या कहते हैं पीवीसी कार्ड कब पहुंचेगा, है ना, आपका एनरोलमेंट किस जगह पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आधार मित्र समथिंग जो कि एआई चैटबॉट है, जो आधार ने, यूआईडीएआई ने रिसेंटली एक्सेप्ट किया है। मूविंग ऑन, हु has become the 13th player from the India to play 100 matches in international cricket? कौन अभी रिसेंटली 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 13 इंडियन बने हैं? केएल राहुल, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, चेतेश्वर पुजारा। बताओ। सचिन अनुराग सिंह डी, वेरी गुड। और कोई? एनीवन एल्स? द करेक्ट आंसर इज डी, चेतेश्वर पुजारा। यस, स्टार्टिंग फ्रॉम 2010, आई गेस 2010 इन्होंने डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन टेस्ट, right? And after 3 years, if I'm not wrong, 2013 में this guy debuted in the ODI team as well, right? And though that was from Zimbabwe. So from 2010 to now, he is going to be the 13th player. उन्होंने अपना 100 टेस्ट मैच खेल लिया है, right? अब वो 100 से ज्यादा हो गए हैं,
and he's one of the favorite, one of the fan favorite, and one of the most reliable test player of India these days. Right. Moving on to the next one. Which former IAS officer has been appointed as the new CEO of Niti Aayog? Niti Aayog, that is National Institute of Transforming India, is a think tank जो प्लानिंग एग्जीक्यूशन और रिपोर्ट्स वगैरह जारी करते हैं. पूछा जा रहा है कि कौन नए फॉर्मर आईएएस ऑफिसर जो हैं सीईओ अपॉइंट हुए हैं. द ऑप्शंस आर नरिपेंद्र मिश्रा, आलोक रंजन, विनोद राय, वीवीआर सुब्रमण्यम. सचिन का कहना है डी. ओके, वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वीवीआर सुब्रमण्यम. अभी जो रिसेंट सीईओ थे परमेश्वरन अय्यर, राइट, he is actually moving to World Bank. I am pretty sure कि executive directors बनाया जा रहा है उनको World Bank का. So he is going to the World Bank and उनकी जगह आईएएस हैं वीवीआर सुब्रमण्यम जो छत्तीसगढ़ कैडर के हैं. ये होंगे क्या नए सीईओ. ध्यान रखना, जो चेयरमैन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नीति आयोग के लीडर होते हैं, और फिर उसके बाद जो वाइस चेयरमैन है, सीईओ वगैरह है, वो प्राइम मिनिस्टर खुद अपॉइंट करते हैं. नीति आयोग started in 2015. Okay. The next question is, which country has been India? Sorry, which country has India's unified payment interface, that is UPI, launched cross-border connectivity? So पूछा रहा है किस कंट्री ने अभी रिसेंटली यूपीआई एक्सेप्ट किया है फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एंड कनेक्टिविटी. दी ऑप्शंस आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मलेशिया, सिंगापुर, कतार. बताओ. ओके, सचिन का कहना है सचिन, आज तो तुम फॉर्म में हो एकदम. क्यों? सारे आंसर्स करेक्ट दिए, बस एक को छोड़ के. नो. ओके. यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर. सो जो अपना यूपीआई है और जो सिंगापुर का पे नाउ है, दे आर द सेम सॉर्ट ऑफ एंटिटी. इनसे वही होता है, मर्चेंट सॉरी कस्टमर टू मर्चेंट, मर्चेंट टू मर्चेंट पेमेंट होता है. राइट. इन्होंने आपस में कोलैबोरेट किया है क्योंकि इंडिया काफी रहते हैं वहां पे. राइट. सो दैट इज वाई ये पर्टिकुलर चीज हुई. एंड लास्ट ईयर 2021 में इनको कनेक्ट करने की बात शुरू हुई थी, एंड अल्टीमेटली 2023 में फाइनली फरवरी एंडिंग में दे आर नाउ कनेक्टेड एंड नाउ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कैन बी डन इजिली. रिवीजन किया हुआ है सचिन, वेरी गुड. रिवीजन इज द की एक्चुअली जानने के लिए. सीखो बाकी लोग. राइट. ओके. So this is it from my side for today, and I hope you guys enjoyed it. I hope you got something good for your exam, and I wish you along all your loved one a good health, good mental health. Just make sure to stay motivated, stay positive for your studies. I'll see you in the next session. Till then, advance mein happy Holi. See ya, guys. Good night.